friends. Today we will be taking the topic of limits, and we will be taking the indeterminate form 1 to the power infinity. Now at this point, let us understand that if we have exact 1 to the power infinity, then the answer would be 1. However, if the factor is approaching to 1 and its power is approaching to infinity, then it is an indeterminate form. Then how to calculate limit? For that, let us take one example. Say limit x tending to 0, 1 plus x to the power 1 by x. Now this is x is tending to 0. So this factor is approaching to 1 and this power is approaching to infinity. So this is 1 to the power infinity form. How to solve it? Let's assume that this is equal to L. Now this expression can also be written as limit x tending to 0 e to the power ln 1 plus x to the power 1 by x. Now these two expressions just the same because we have used the property of log, which says that e to the power log of something would give us just that this something would be here. So these two are just the same. और अगर हम यहाँ पे log की और properties को use करें, जैसे कि e to 1 by x से ये आगे आ जाएगा. So e to the power 1 by x ln 1 plus x. Now further we can expand the logarithm, use the expansion of logarithm. So we get e to the power 1 by x, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4 plus so on. अब x से डिवाइड कर देंगे अंदर, तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus x cube by 4 अब so on. अब जब हम x को 0 यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास बचेगा e to the power 1, that is just 1. अब जो ये हमारे पास रिजल्ट आया है, इसको हमें याद करना है. That is limit x tending to 0 1 plus x to the power 1 by x gives us e. यानी कि जब x टेंड कर रहे 0 को, ये एक्सप्रेशन टेंड कर रहे 1 को, इसकी पावर टेंड कर रही है इंफिनिटी को. 1 to the power infinity would give us e. This expression can also be rewritten as limit x tending to infinity 1 plus 1 by x to the power x is e. Because x tending to infinity, it means this is becoming 0. So this is becoming 1. So again we have 1 to the power infinity. Its answer would be e. Now we can also replace this x by fx, and still we would get just the same result. Like say we have limit fx tending to 0 1 plus fx whole to the power 1 by fx. This again would be e because fx is tending to 0 and this is 1 by 0 infinity. Again we have 1 to the power infinity. Answer would be e. This expression can be written in a better way like this. Limit x tending to a, say any number a, 1 plus fx to the power 1 by fx. This again would be e because here we have been given that for x tending to a, fx is tending to 0, right? So again we have this is 0 and this is infinity. 1 to the power infinity, answer would be e, provided these two factors are just the same. But what if these two factors are not same? Say we have this limit x tending to a 1 plus fx to the power gx, and we have been given that for x tending to a, fx is tending to 0 and gx is tending to infinity. So again we have 1 plus 0, that is 1 to the power infinity. Now for this to hold, these two factors should be same, but here these two factors are not same. So let us make them same. How can we make them same? This can be written as limit x tending to a 1 plus fx whole to the power 1 by fx into fx into gx. What we have done here, यहाँ पे हमने fx से डिवाइड किया, fx से मल्टीप्लाई किया, so no difference. But इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. This value is already e. That is when we take limit, so we get e. This is e to the power limit x tending to a fx into gx. ये जो लिमिट है सिर्फ इसके ऊपर लग जाएगी. इसका आंसर हमने ऑलरेडी e लिख दिया. तो यानी कि अगर हमें ये गिवन है, तो हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख देंगे e to the power fx into gx, यानी कि 0 वाला फैक्टर into infinity वाला फैक्टर.
लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, वहां पे हमें 1 नहीं दिया होता, हमें 1 अपनी तरफ से बनाना पड़ता है. सो लेट अस सी हाउ वी डू दैट. जैसे कि अगर हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू a fx to the power gx. Now it is given that for x tending to a, fx is tending to 1 and gx is tending to infinity. So we have got this form 1 to the power infinity. But we have been dealing with the cases where we are given 1 plus fx to the power something. यानी कि अब हमें इसको 1 plus something की फॉर्म में बनाना पड़ेगा. कैसे? सिंपल है. लिमिट x टेंडिंग टू a 1 plus fx minus 1 होल टू द पावर gx. अब यहाँ पे अगेन हमारे पास बन गया 0, यहाँ पे इंफिनिटी है, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस. अब हमें इसका आंसर डायरेक्टली पता है. कैसे? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx. यानी कि जो 0 वाला फैक्टर था, इंफिनिटी वाला फैक्टर था, वो हमने e की पावर में लिख दिया. ठीक है, तो हमें इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होंगे fx टू द पावर gx. हम उसको कैसे लिख देंगे? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 and gx. Let us do one question on this. Let us also track time. How much time do we have? So say we have this question, limit x tending to infinity, x square plus 5x plus 3 divided by x square plus x plus 3 whole to the power x. Now this is infinity by infinity form. To the power infinity, infinity to the infinity. So this is infinity by infinity. We know how to solve this. अगर हम x की जो हाईएस्ट पावर है उससे अगर हम डिवाइड करते, यानी कि हमारे पास क्या, अगर हम x की हायर पावर से डिवाइड करते हमारे पास बचेगा 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर. So this is 0, this is 0, this is 0, this is 0 when we put x tending to infinity. So we would just get 1. यानी कि दिस इज एक्चुअली ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी. अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास fx टू द पावर gx है. अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 माइनस 1 इंटू x, fx माइनस 1 इंटू gx. अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेके हमारे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स. यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 3 कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास बचा 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर. दैट इज e टू द पावर, दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. वी गॉट 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3. अब अगर हम x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दें हमारे पास क्या बचेगा? 4 बाय समथिंग. दिस फैक्टर, these factors will become just 1 and this is 1. So this is 4 by 1. So answer is e to the power 4. Alright? So we saw fx to the power gx and this is what we have got. We can do quickly one more question which is of trigonometric function. वहां पे हमारे पास हमें दे रखा है say limit x tending to 0 tan of pi by 4 प्लस x टू द पावर x, टू द पावर x. हमारे पास ये फॉर्म दे रखा है हमारे पास. अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं हमारे पास क्या बचा? 1 टू द पावर इंफिनिटी. अब हम अगेन यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे अब हमें 1 बाय x लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इंफिनिटी की फॉर्म चाहिए. तो ये 1 बाय x था हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे डिवाइडेड बाय x आ जाएगा. 1 बाय x ले लेते हैं. अगर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं tan 45 प्लस x का, हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 इंटू 1 बाय x. अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू 1 बाय x. 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा 2 tan x. लेकिन अगर जब हम लिमिट लगाएंगे tan x by x would give us 1 and this tan x is 0. So it means we would just get e square. That is our answer. एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. So keep practicing with just simple formula. Thank you everyone. Thank you.